Hello students, in last video we have discussed mitosis, we have discussed karyokinesis of mitosis. Now in this video we are going to discuss about cytokinesis. Now as it is clear from the word that is cytokinesis is a division of cytoplasm. Now division of cytoplasm in case of plant cell and animal cell is little different. So let's discuss in case of plant cell. In plant cell, this was a telophase stage. Sorry, in case of animal cell, this is nucleolus. This is the another chromatin material. This one is a nucleolus, and at the end of telophase, nuclear membrane was reappear. टेलोफेज के एंड पर क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया था, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया था, क्रोमैटिन मटेरियल बन गया था. नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एनिमल सेल? देयर विल बी अ कंस्ट्रिक्शन. अंदर की तरफ एक कंस्ट्रिक्शन शुरू होगा इस तरीके से. क्लियर? जिस तरीके से बलून होता है ना, बलून को हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और जैसे 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 पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाते हैं. So the division is from periphery to center इस तरीके से, and finally the balloon divided into two parts in the same way. ये पहले कंस्ट्रक्शन पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हुआ, फिर फर्दर ये जो कंस्ट्रक्शन है और गहरा हो जाएगा. And finally the construction will go deepen, and finally there will be टू डॉटर सेल. दो डॉटर सेल से बन जाएंगी जिसके अंदर दिस वन इज अ क्रोमैटिन मटेरियल, दिस इज अ न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज सेंट्रीपीटल काइंड ऑफ cytoplasm division. It is a centripetal cytokinesis. It occurs in case of animal cell, and centripetal move from periphery to center. Periphery से वो center की तरफ जाता है. पेरी मतलब क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पेरीमीटर. What is peri? Peri is the boundary. So periphery to center. पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम क्या है? पेरी मीन्स चारों तरफ, कार्डियम मतलब हार्ट. So peri word is related with the boundary. So boundary से center की तरफ आएगा. Clear? Now, in case of animal cell, we have discussed that we have cytokinesis in the form of centripetal kind of. That is, cytoplasm divide from periphery to center. Now, in case of plant cell, it is kind of centrifugal. Now, what is the centrifugal kind of cell division? Cytokinesis. In case of centrifugal kind of cytokinesis, cytoplasm divide from center to periphery by the formation of cell plate. Now look on the diagram. हम इसको diagram से समझते हैं. This is cell 1. Clear? This one is the cell membrane. Right? And these are two structure. This is the one cell, this is the another cell. अभी ये divide नहीं हुआ है. ये दो nuclear membrane है actually. This is the nuclear membrane. This one is nuclear membrane. Inside this nuclear membrane, this is the chromatin material. This one is also chromatin material. And this is a nucleolus. This is the nucleolus. Now nucleus has divided. Now we have to divide cytoplasm. What will happen in case of plant cell? In case of plant cell, there will be deposition of cellulose from center to periphery. Center से periphery की तरफ, बाहर की तरफ centrifugal division होगा और इस तरीके से पूरा एक सेल प्लेट बन जाएगा. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्कन कर दूं ताकि आपको समझ में आए. ये सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज. Can you
name which cell organelle will help in the deposition of the cellulose? This is Golgi apparatus. Golgi apparatus acts as a fruit factory of the cell, where whatever the secretion is required, that is done with the help of Golgi apparatus. So again, ये cellulose का deposition किसकी help से हुआ है? Golgi apparatus. Now, why the deposition of cellulose? Can you guess it? Very simple. Plant cell के अंदर क्या होता है? There is a cell wall. यहाँ पर हमको cell wall बनानी है additional. वो additional cell wall किसकी बनेगी? वो cellulose की बनेगी. That's why there is a deposition of cellulose, and this structure is known as cell plate formation. Right? So, in case of plant cell, cytokinesis, that is division of cytoplasm, is centrifugal kind of. Centrifugal. Hope you have heard this word in physics. Centrifugal force आपने पढ़ा होगा, which acts from center to outside. सर्कुलर मोशन के अंदर होता है. तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो फोर्स लग रहा है, या सेंटर से जो पेरिफेरी की तरफ डिवीजन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल काइंड ऑफ साइटोकाइनेसिस. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक. तो यदि हम डिस्कस करें इससे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइटोकाइनेसिस. In animal cell, it is centripetal kind of cell division, while in case of plant cell, it is centrifugal kind of cell division, right? In case of plant cell, there is a formation of cell plate, while in case of animal cell, there is no formation of cell plate. In fact, there is a constriction from periphery to center, while in case of plant cell, it is the deposition of cellulose from center to periphery. Clear? Now, what is the significance of mitosis? Significance of mitosis हम डिस्कस करते हैं. Mitosis. Number 1, mitosis is a cell division responsible for growth. Mitosis is responsible for growth. Mitosis is responsible for repair. Mitosis is responsible for replacement of old cell. How many daughter cells are produced? 2 daughter cells are produced. Number 3, it is equational cell division. Equational cell division means number of chromosome remain same. Number of chromosome remain same. It is a qualitative and quantitative equational cell division. कैसा? Qualitative and quantitative equational cell division. Now, what is the meaning of qualitative? Means it will produce identical daughter cells. क्वांटिटेटिव, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. कैसे रहते हैं इसको एक बार समझते हैं हम लोग. सी, वी हैव स्टार्टेड mitosis in any of the somatic cells. Somatic cells are the general body cells, and general body cells are diploid in nature, right? Before mitosis, at the stage of interphase, there will be a duplication of DNA material, and it will duplicate and form 4n number of chromosome. Right? Now, how many daughter cells are produced? 2. And each is having 2n number of chromosome. So, quantity remains same. And there is no exchange of character. हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है इस पूरे के अंदर. So, quality will also remain same. It will produce identical daughter cell. Now, next topic is meiosis. The detailed description of meiosis is not in your syllabus. There is a definition of meiosis is important. Significance of meiosis is important, and in meiosis, crossing over is important, that we are going to discuss. So, what is meiosis? Meiosis is a reductional cell division
एंड मियोसिस अकर्स इन जेनेटिक सेल। मियोसिस किसके अंदर होता है? जेनेटिक सेल के अंदर होता है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एग का जो फॉर्मेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब किसकी हेल्प से होता है? मियोसिस की हेल्प से होता है। मियोसिस को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। द रीजन ड्यूरिंग मियोसिस फ्रॉम वन सेल 4 डॉटेड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इट ऑल्सो स्टार्ट विद अ डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करके 4 सेल बनेंगे एंड देन इट विल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल and each daughter cell is haploid. Now what is diploid and what is haploid condition, that we are going to discuss. Haploid means single set of chromosome, diploid means 2 set of chromosome, right? During this crossing over takes place, that's why variation occur. Now meiosis will continue in next video. Thank you.